एक्स। फाइन। प्लस वो एज जिस पर एक पॉलिसी होल्डर एक पॉलिसी खरीदता है, उस एज को हम क्या कहेंगे? एक्स। फाइन। नेक्स्ट, नेक्स्ट नोटेशन is class lx. So what is lx class? It is number of lives alive at age x years. कि x years के क्लास कितने लोग जिंदा हैं, that is given by class lx. And let us take example. If I say L40 is equivalent to 1000, what is the meaning of this? This means class 40 years के कितने लोग जिंदा हैं? There are 1000 people alive of age 40. Fine. Any problem with this? The class next notation is given by dx. This is what it is: number of lives die between age x to x plus 1 year. फाइन। कि x और x plus 1 के बीच में कितने लोग डाई करेंगे, दैट इज गिवन बाय क्लास dx. तो लेट्स से L40 is 1000, L41 is 990. Now what is the meaning of this? कि 40 इयर्स के 1000 लाइफ जिंदा थे, 41 तक आते आते कितने लोग रह गए? 990. तो हाउ मेनी पीपल आर डाइड बिटवीन 40 टू 41? तो क्लास फ्रॉम 40 टू 41, can I say 1000 minus 990, which is 10 lives died between 40 to 41? तो क्लास इन शॉर्ट dx का आपका फॉर्मूला क्या हो गया? lx माइनस lx प्लस 1. फाइन क्लास। कुछ प्रॉपर्टीज हैं क्लास dx की जो आपको ध्यान रखनी है, सॉरी lx की प्रॉपर्टीज हैं कुछ जो आपको ध्यान रखनी है. नंबर वन, lx इज ऑलवेज अ डिक्रीजिंग फंक्शन. क्योंकि अगर x पर L40 पे अगर 1000 लाइफ जिंदा हैं, तो क्लास जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो लाइफ जो होंगी वो क्या होंगी? कम होंगी, कभी ज्यादा नहीं हो सकती, अगर हम सेम एज ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं. राइट? दूसरी चीज क्लास, इट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव फंक्शन. ये पॉजिटिव फंक्शन होगा. कैन आई से देर आर माइनस 1000 लाइफ अलाइव? नहीं. तो जो हमारा LX फंक्शन है वो हमेशा क्या होना चाहिए? एक पॉजिटिव फंक्शन होना चाहिए. जीरो हो सकता है क्लास ही, बट ये नेगेटिव नहीं होगा. फाइन. तो रिमेंबर दिस थिंग अबाउट LX. प्लस जो LX की इंफॉर्मेशन है वो हमें ऑलरेडी गिवन है. वी आर यूजिंग 3 टेबल्स. वन इज ELT15, AM92 and PMA PFA table. Fine. The class page number 67 of actuarial table, page number 73 and page number 109. Class, these are the 3 tables we are using throughout our chapter number 15 to 28. First is ELT. ELT stand for class English lifetime table. This is English lifetime table. So what they have done class? They have taken the data of England and Wales for year 90, 91 and 92, right? And they have given the information to us. Plus अगर हम डिफरेंट एरिया की बात करेंगे तो मोर्टेलिटी भी डिफरेंट होगी. नेक्स्ट इज एश्योर्ड लाइफ मोर्टेलिटी टेबल. यूके का डेटा उन्होंने लिया है फॉर द 4 years and they have printed the given information for age x, all LX. एंड तीसरा हम क्लास पेंशनर मोर्टेलिटी टेबल की बात कर रहे हैं, इसको हम पीएमए बोलते हैं. यहां पे क्लास पीएमए फॉर मेल, पीएफए इज फॉर फीमेल टेबल. क्लास डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट अजम्पशंस चाहिए. लाइक अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे, इन लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट इज गिवन ऑन डेथ, राइट? वेयर एज अगर हम पेंशन की बात करते हैं, क्लास पेंशन में बेनिफिट तब मिलता है जब बंदा जिंदा रहता है.
तो दोनों का जो थिंकिंग प्रोसेस है वो डिफरेंट है। तो इसीलिए क्लास पेंशन्स के लिए डिफरेंट टेबल यूज होता है और लाइफ इंश्योरेंस के लिए डिफरेंट होता है। बट क्लास हमें यहां पर इतना दिमाग नहीं लगाना है। ये तो मैंने आपको जस्ट डिफरेंस बताया तीन टेबल्स का। आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा क्लास कि आपको ईएलटी यूज करना है, AM92 यूज करना है या पीएफए पीएमए करना है। फाइन, एनी प्रॉब्लम? So class, these are the following tables given on our actuarial table. So class, let's see ELT 15 mil table. We have given X and we are provided with LX and DX. Fine. Let's say we have to find L40 using ELT 15. तो ELT 15 मेल में L40 की वैल्यू कैसे देखेंगे? 40 this 96,500. Fine. Similarly, class we have ELT 15 female table. तो अगर मुझे L30 निकालना है ELT 15 फीमेल से, तो क्लास L30 we have 30, this is the value given to us, so we can write 98617. तो in this way they always tell you कि आपको टेबल कौन सा देखना है। क्लास सिमिलरली वी हैव AM92। क्लास अभी ये स्क्वायर ब्रैकेट वाले इग्नोर कर देने प्लीज, इन दोनों को नहीं देखना अभी। विल सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज। अभी फिलहाल हमें नॉर्मल LX देखना है AM92 में। तो अगर मैंने बोला फाइंड L50 AM92 से, और AM92 में मेल फीमेल का नहीं, सिर्फ एक ही डेटा दिया हुआ है मेल का, राइट? तो वो सिर्फ AM92 बोलेगा। ELT के अंदर बोलेगा कि आपको मेल टेबल देखना है या फीमेल देखना है, राइट? तो क्लास L50 देखना है, L50। और क्लास इसमें डेटा आपको डेसिमल्स में दिया है, रिमेंबर। तो 9706.0977। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आपका नंबर ऑफ लाइफ्स डेसिमल में कैसे हो सकता है? क्लास अगर हमने देखा था AM92 डेटा 90, 91, 92, 93, 94 के लिए है, तो उन्होंने एवरेज लिखा हुआ है ये नंबर कि व्हाट इज द एवरेज डेटा पर ईयर, तो इसीलिए ये डेसिमल में आ रहा है। फाइन, तो रिमेंबर दीज आर इन डेसिमल। सिमिलरली क्लास पीएमए टेबल भी दिया हुआ है पेंशनर वाला, इसमें भी आपको एक्स एंड एलएक्स दिया हुआ है और यहां पर एज 50 से डेटा दिया हुआ है। रीजन, अगर आप पेंशन की बात करेंगे 50 से पहले कोई पेंशन देगा ही नहीं, इसीलिए यहां पर एज जो स्टार्टिंग है वो 50 है। फाइन, तो अगर मैंने बोला फाइंड L55 यूजिंग पीएमए टेबल, PMA 92C20, तो क्लास L55 दिस इज गिवन, सो इट इज 9904.805। फाइन, so in this way we have given the information। प्लस यहां पर आपको dx ऑलरेडी गिवन है इसी में, AM92 में भी dx गिवन है, पेज नंबर 76 चेक कीजिए, आपको वहां पे dx मिल जाएगा। क्लियर क्लास, एनी प्रॉब्लम? सो प्लीज गो थ्रू द टेबल, पेज नंबर 68 पर आपको ELT 15 मेल दिया हुआ है। AM92 के लिए पेज नंबर 74 चेक कीजिए और ये डेटा आपको पेज नंबर 110 पे दिया है। क्लियर? चले क्लास, आफ्टर LX and DX the next term we are using is TPX। T और X सबस्क्रिप्ट में है क्लास। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइफ एज X सर्वाइव नेक्स्ट T years। ये क्या चांसेस हैं कि जो लाइफ एज X है वो नेक्स्ट ईयर्स जिंदा रहेगी? तो क्लास हमने प्रोबेबिलिटी की जो फॉर्मूला लिखा है वो क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, राइट? तो क्लास अगर मैं लिखता हूं 1P40
और क्लास बाय डिफॉल्ट 1p40 को हम p40 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, क्या चांसेस हैं कि 40 वाला 41 तक जिंदा रहेगा? दिस 40% एज 40% विल अलाइव टिल 41, राइट? तो क्लास क्वेश्चन में हमें दे रखा है 40 के सपोज 1000 लाइफ जिंदा हैं और 41 तक आते आते सिर्फ 990 जिंदा रहेंगे एज पर दिस। तो व्हाट आर द चांसेस? तो कैन आई से माय 1p40 can be written as L41 divided by L40, right? So this is what 990 divided by 1000, which is 0.99. Clear class? Now similarly class, अगर मैं बात करूं 2p40 की, इसका मतलब क्या है? क्या चांसेस है 40 वाला बंदा 42 तक सरवाइव करेगा, राइट? तो लेट अस सपोज 42 तक आते आते यहां पर 985 लोग जिंदा हैं। तो क्लास अब क्या हो जाएगा आपका 985, दैट इज L42 डिवाइडेड बाय L40, दिस इज 985 डिवाइडेड बाय 1000। तो व्हाट आर द चांसेस? 0.985 कि आउट ऑफ दीज नंबर ऑफ पीपल दीज पीपल आर सर्वाइविंग। फाइन क्लास। तो क्लास सिमिलरली व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टीपीएक्स? टीपीएक्स का फॉर्मूला क्या होगा? तो इट इज एल एक्स प्लस टी डिवाइडेड बाय एल एक्स क्लास। सो दिस इज माय फॉर्मूला फॉर टीपीएक्स। फाइन, एनी प्रॉब्लम क्लास? नाउ लेट्स टेक एग्जांपल। Now class, let's do this question. It says find 5p30 using ELT15 female. Now class, first thing, what is 5p30 means? This means probability of life age 30 will survive next 5 years. क्या चांसेस हैं कि जो 30 वाला है वो नेक्स्ट 5 इयर्स सर्वाइव करेगा? दैट इज द मीनिंग ऑफ 5p30 क्लास, राइट? सो what is the formula for 5p30 class? So we have seen tpx is lx plus t divided by lx. So class, this is L30 plus 5 divided by L30, right? So class, L35, if you check the table, it is 98359 divided by L30 is 98617. Fine. So class, when you simplify this 9, it is so class we get 0.997383. And class, remember we have to take 6 digits after decimal for all these values of TPX. Fine. Any problem? Now class, similarly we have next notation. Class, similarly TPX की तरह हमारी एक और notation है TQX. जैसे TPX probability of survival है क्लास, वैसे ही यहां पर TQX means probability of death. So it is probability of life age X will die between X to X plus P years. कि क्या चांसेस हैं क्लास जो ये लाइफ एज X है वो X और X प्लस T के बीच में डाई कर जाएगा? फाइन, यहां पर बंदा जिंदा है, यहां तक आते आते वो डाई कर गया। क्लियर क्लास? एनी प्रॉब्लम? क्लास, हमने एक रिजल्ट पढ़ा था CS1 में, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस इज 1। तो सिमिलरली
probability of survival plus probability of death, this is equivalent to what? 1. So class, can I say TQX? It is 1 minus TPX, right? So it is 1 minus Lx plus T divided by Lx, right? So class, my TQX will be what? Lx minus Lx plus T divided by Lx. और क्लास प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन से भी मैच करता है. Lx माइनस Lx प्लस T क्या कहता है? दिस इज नंबर ऑफ लाइफ्स डाई बिटवीन एज x to x plus t years divided by number of lives alive at age x years, राइट? क्लास, इसको आप dx नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आप dx की डेफिनेशन याद करें, dx इज lx माइनस lx प्लस 1. ये नेक्स्ट 1 ईयर में कितने लोग डाई किए उसकी बात करता है. बट टी क्यू एक्स के अंदर क्या है? नंबर ऑफ लाइफ डाई बिटवीन एक्स टू एक्स प्लस टी. फाइन क्लास. Now class, I request pause the video and try to solve this question. First write in words what is the meaning of this and then find the value of this class. Fine. So class, first, what is 6q31 means? This means probability of life age 31 will die within next 6 years. Right? Now class, how to find the value of this? So we have to find number of people die between 31 to 37, right? So class, L31 minus L37 whole divided by L31, right? So class, check the value. L31, this is given to us 9919.3535, right? Minus L37, it is this 9880.454 whole divided by 9919.3535. Right class? Solve this. Class, when you solve this, we get 0.003921. Fine. You have to take 6 digit after decimal class. Fine. Class, remember TQX को हम एक टर्म और बोलते हैं. This is also known as initial rate of mortality. Fine. Remember this. Clear class? 1QX can be written as QX, right? And class, QX का फॉर्मूला क्या होगा? LX minus LX plus 1 divided by LX, right? तो class, QX can be written as DX divided by LX. Remember. तो ये आप शॉर्टकट याद रख सकते हैं. और क्लास, मोस्टली टेबल के अंदर 1QX की वैल्यू आपको गिवन है. लेट मी शो यू. सी क्लास, on class page number 79 we have given QX for AM92. Fine. तो 1QX की वैल्यू गिवन है क्लास. फॉर TQX आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी. फाइन. एनी प्रॉब्लम विद दिस? Class, I request you to please pause the video and try to solve this question yourself first, then we will discuss. Fine. So class, let's solve this question. Class, first we are not using any table. We have given LX function, right?
Now first part से find the probability of life age 40 will survive next 10 years. That means what we have to find class, कि life age 40 will survive next 10 years, 10p40. The class formula for this is what? L50 divided by L40, right? Plus L40 plus T given है तो L40 means what? 1000, right? And L50 means what? 1000 minus 20 into 10, which is 800 class, right? So this is what class? 800 divided by 1000, which is zero point 0.8 class. So 80% of the people are surviving 10 years class. Now class next part, it says we have to find 10q50. क्या चांसेस हैं कि जो लाइफ एज 50 है वो नेक्स्ट 10 इयर्स में डाई कर जाएगी? दैट मीन्स 10q50 क्लास. व्हाट इज दिस इक्वलेंट टू? तो क्लास दिस इज L60, sorry, L50 minus L60 divided by L50, right? So class, what do you get? It is 800 minus 600 divided by 800, right? So class, we get 200 by 800, that is 2 by 8, so which is 1 by 4. Fine class. Now class, let's solve the last part. The probability of life age 40 will die between 50 to 60 years. तो क्लास इस पार्ट में मैं बोला है कि जो 40 वाला है वो 50 और 60 के बीच में डाई करेगा, राइट? अब क्लास, to die between 50 to 60, this person must survive this 10 years. क्योंकि क्लास अगर वो इसके बीच में डाई कर गया तो एक डेथ पर्सन दोबारा थोड़ी डाई करेगा. तो क्लास 40 टू 50 सरवाइव करेगा तभी तो 50 टू 60 के बीच में डाई कर सकता है, राइट? तो क्लास दिस इज व्हाट? 10p40 into 10q50, right class? So what do you get? 0.8 into 1 by 4, this is equivalent to 0.2 class. फाइन. तो 20% चांसेस हैं कि जो लाइफ एज 40 है वो 50 और 60 के बीच में डाई करेगा. फाइन क्लास, एनी प्रॉब्लम? Now class, same question please try with AM92 table. Fine. AM92 से इन तीनों पार्ट्स को प्लीज सॉल्व कीजिएगा. That is your homework class. Fine. The class next topic is principle of consistency. Now what is the principle of consistency says class? Class, जैसे हमने देखा था इनिशियल चैप्टर्स में, अगर हमें एक से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो तो हाउ टू फाइंड एक्यूमुलेशन? तो क्लास पहले हम T1 पे निकालते हैं, देन वी विल फाइंड एट T2, राइट? सो दिस इज व्हाट वी हैव डन फॉर इंटरेस्ट रेट. रिमेंबर? राइट? सिमिलरली क्लास, इफ आई हैव टू फाइंड 10p40, मुझे 10p40 की वैल्यू निकालनी है, बट क्वेश्चन सेज 40 से लेकर 44 तक वी आर यूजिंग AM92. एज 44 पर आकर मोर्टालिटी चेंज हो जाएगी क्लास. इट मींस यहां से लेकर यहां तक वी हैव ELT15 मेल. क्लास मोर्टालिटी मींस रेट ऑफ डेथ. फाइन. तो क्लास वी आर यूजिंग डिफरेंट टेबल्स फॉर दिस. तो वी कांट write directly. If I write 10p40 is equal to L50 divided by L40, this is wrong in this scenario. आप डायरेक्टली इसको नहीं लिख सकते. फाइन. तो क्लास इस सिनेरियो के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? पहले लाइफ एज 40 को कहां तक करना पड़ेगा? 44 तक. तो व्हाट इज दैट? तो एज क्या है हमारी? 40, राइट? हाउ मेनी इयर्स इन बिटवीन 40 टू 44?
there are 4 years. So we'll write 4p 40. मल्टीप्लाई होता है बीच में, यहां पर भी मल्टीप्लाई आएगा. Now the current age is what? 44. How many more years till 50? There are 6 years. Fine. इसको डैश लिख लीजिए क्योंकि दोनों मोर्टेलिटीज क्या हैं? अलग अलग. Now simplify. This is L44 divided by L40. L50 dash divided by L44 dash. Fine class. Substitute the values from the tables and find the answer class. Clear? So class, when you check your actuarial table, you get these values. Fine. क्लास आप इन दोनों को कैंसिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यूज क्या हैं आपकी? अलग अलग. रिमेंबर दिस. फाइन. एनी प्रॉब्लम? तो क्लास सिमिलरली pause the video and solve this question. What you get? Fine. So pause the video and solve this first, then we will discuss. तो क्लास जब भी आप प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी की बात करेंगे, नंबर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? दिस मींस लाइफ एज 30 will survive next 8 years. So life age 30 will survive next 8 years, that is 38. This means life age 30 will survive next 3 years, 30 से लेकर 33 तक, right? और this means what? A life age 36 will survive next 2 years, 36 से लेकर 38 तक, right? तो this is already given. बचा है ये in between वाला. What is this? P current age is 33 and how many more years? 3 years, right? So this is 3p 33. Fine class. Similarly class, please solve this. Now class, again pause the video and try to find x, y, z. I'll give you a hint. Please make a number line and then find the value of x and y. So class, what is the meaning of this? This means a life age 52 will survive next 12 years, that is still 64, right? Now class, this means 3pz. Z से 3 साल, मतलब sorry, this means what? 3 years survive करेगा, last 3 years. So last 3 years means what? Z is equivalent to 61. 3 years का gap है, right? 4 year before this, तो 4 year before this means what? Y is equal to 4 minus करेंगे, we get 57. And x is what? In between these, so x is equivalent to 5 class. Fine. So in this way, the number line is very, very important for principle of consistency. Fine. Any problem? Now class, a very, very important note, principle of consistency does not hold for TQX. TQX के लिए क्लास प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी होल्ड नहीं करता. That means I can't write 10Q40 is equivalent to 4Q40 into 6Q44. क्यों क्लास? रीजनिंग क्लास मैंने अभी दी थी, बिकॉज अगर एक लाइफ डाई कर गई, दिस लाइफ कांट डाई अगेन, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होगा. फाइन. तो
दिस ओनली होल्ड इन एकता कपूर सीरियल्स क्लास। वहां पर एक पर्सन पता नहीं कितनी बार डाई कर जाता है, अदरवाइज इन रियल लाइफ इट विल नॉट होल्ड। फाइन। तो क्लास सिचुएशन ये आ सकती है, क्वेश्चन से फाइंड 10Q40। अगेन हमें सेम सिचुएशन दी हुई है कि 40 से लेकर 44 तक वी आर यूजिंग ELT15 सॉरी AM92 एंड 44 से 50 वी आर यूजिंग ELT15। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो क्लास इस सिचुएशन में हम पहले इसको पी में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट वी राइट 1 माइनस 10P40। क्यों? क्योंकि हम पी के अंदर तो प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी लगा सकते हैं। तो क्लास दिस इज 1 माइनस 4P40 into 6P44। Fine. So in this way, we solve the problem of principle of consistency for QX class. Remember this. This is a very very important concept. और बहुत ही common mistake होती है students की ये, क्योंकि everyone is influenced towards एकता कपूर serials. Fine class. Any problem? Now class, pause the video and solve this question yourself first. Then we will try it. Fine. Now class, let's solve this question. What it says: find the probability of life age 42 will die between 48 to 54 years. So class, life age 42 है. It is dying between 48 to 54 years. Right? तो क्लास मैंने पहले बताया अगर 42 और 48 के बीच में वो डाई करेगा, सॉरी 48 से 54 के बीच में अगर वो डाई करेगा, दैट मींस 42 से 48 उसको सर्वाइव करना पड़ेगा। देन ओनली द पर्सन डाई बिटवीन 48 टू 54, क्योंकि दो बार वो डाई नहीं कर सकता। दैट मींस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है? वी नीड टू फाइंड 6P42 42 नेक्स्ट 6 इयर्स। करंटली एज 48 है और डाई विद इन नेक्स्ट 6 इयर्स। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। बट द ट्रबल इज क्लास, हमें क्वेश्चन में दे रखा है 40 टू 50 वी आर यूजिंग ELT15 एंड देन वी आर यूजिंग PMA 92C20 टेबल। तो क्लास टिल 50 we are using ELT15, so we are using ELT15 and after this we are using PMA। फाइन क्लास। तो क्लास 6P42 की वैल्यू तो निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसके लिए वी आर यूजिंग टू टेबल्स, यहां से लेकर 50 तक अलग और 50 से 54 अलग। एंड रिमेंबर क्लास, इसके अंदर हम प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी नहीं लगा सकते। तो क्लास दिस इज 1 माइनस 6P48। राइट नाउ 6P42, प्लीज अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी हियर। 48 से 50, 2P48, राइट, एंड देन 50 से 54, दैट इज 4P50 डैश कर दीजिए, सो दैट these two probabilities are different. So class 6P42 is what? 1 minus, sorry, we can write this as L48 divided by L42, 1 minus what? L50 divided by L48 into L54 dash divided by L50 dash. Right class? Now check the actual table and substitute the values according to ELT15 and PMA 92C20. Fine. So class, when you simplify this, you will get the final answer as 0.010413. Please check. Fine. So class, let's see one question from your past year papers. What it says: a life age 65 assumed to be subject to an annual initial rate of mortality. Plus initial rate of mortality is what? QX. Remember, equal to twice that of AM92 ultimate table for next 2 years. मतलब प्लस हमें क्या दिया है? QX dash is twice of QX, where QX is mortality from AM92. Right? Now it says calculate the probability that a life age will die before age 67. तो क्लास हमें 2Q65 डैश निकालना है इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। फाइन। तो क्लास हाउ टू सॉल्व दिस? बस प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी मैं इसमें नहीं लगा सकता, क्योंकि हमें ये रिलेशन दिया हुआ है टेबल्स के लिए 2 इंटू क्यू एक्स क्लास। सो प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी के लिए मुझे पहले इसको पी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। राइट नाउ क्लास, अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, वी गेट P65 dash into P66 dash। right now class, since we have given the relation with q, again convert into q, so this is 1 minus 2 into q65, 1 minus 2 into q66। fine class. Now class, substitute the value of q65 and q66 from AM92. So class, it is 1 minus 2 into 0.014243 and 1 minus 2 into 0.015940। fine, simplify this and get the answer. Clear class?
Hello class, hope you have seen the first video and understood the notation TPX, TQX and principle of consistency. Now class, in today's video, we talk about the measurement of future lifetime random variable. That is, there are two random variable, one is curted, other is complete. Fine. So in this video, I will discuss first about the curted. Fine. So class, measurement of future lifetime of an individual is random variable. Why? Because we don't know how many years a life survive after एज x, तो वो अपने आप में एक अनसर्टन इवेंट है, तो इसीलिए वो अपने आप में क्या है, एक रैंडम वेरिएबल. तो क्लास CS1 में हमने देखा है देयर आर टू काइंड्स ऑफ रैंडम वेरिएबल. वन इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल which take discrete values, and another is continuous random variable. So class, here my discrete random variable is known as quartet future lifetime random variable. Fine. And my continuous random variable is known as complete future lifetime random variable. Fine. Plus random variable है, it is denoted by capital letter. So this is denoted by kx and this is denoted by tx. Fine. So let's study one by one the quartet and complete future lifetime random variable. So let's first study quartet future lifetime random variable. Now class, quartet future lifetime random variable measure complete number of years a life survive after age x years. कि आफ्टर एज एक्स कितने कंप्लीट इयर्स एक लाइफ सर्वाइव करती है, दैट इज गिवन बाय कर्टेड फ्यूचर लाइफ टाइम रैंडम वेरिएबल. तो क्लास, व्हाट आर द वैल्यूज टेकन बाय के एक्स, लेट्स डिस्कस. तो क्लास, लेट अस सपोज एक लाइफ एज 40 है एंड दिस लाइफ डाइड एट 40.25 years, राइट. तो हाउ मेनी कंप्लीट इयर्स अ लाइफ सर्वाइव? प्लस कंप्लीट ईयर होता 41 पर, 41 पर आकर एक ईयर कंप्लीट होता, बट दिस लाइफ डाई बिफोर दिस टाइम पीरियड, तो हाउ मेनी कंप्लीट ईयर्स? 0. दैट मीन्स माई kx कैन टेक वैल्यू 0, right? Similarly, if life died at 41.75 years, right? So that means this life 40 completed 1 year before death. So my kx can take value 1 plus. Suppose life died at 42.3 years. How many complete years? Class. So this life completed 2 years before death. So kx can take value 2 class. And so on, class, it can take value infinity. Fine. Class, infinity इसीलिए लिया, although we know that no life can survive for infinite years, but we don't know at time 0 how many years a life survive. That is why we have considered infinity. Fine.